Good morning students, welcome to Commerce Canpit Odisha. Today we'll start with a new chapter, that is chapter number 5, Audit Sampling, Audit Techniques and Analytical Procedures. ठीक अच्छी again like all other chapters, a chapter रे मध्य बहुत new inclusions अच्छी हमें देखी जो especially the scrutiny assessment part जहाँ भी अच्छी सेड़ा बहुत नुआ part टा add जोड़ा हेची अगर तुम देखिबो से textbook डारे किछि हेले नथिबो एथरे mention. Okay, first देखो audit sampling. Audit sampling माने कौन? गोटे क्वेश्चन आमे काली डिस्कस करथिलु ऑडिट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन एविडेंसेस बुझला तो एविडेंस टा हमें केंदी बाहर करिया ऑब्वियसली सैंपल्स रु बाहर करिया बुझला ना नहीं तो सैंपल रो मीनिंग कोन ना सबु जागर गुटे 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 बाछि की जिबार जदी हम आइसक्रीम खायो जाउछ हैला आमे जाननो सेडी को फ्लेवर मिलुछ तमे कोन करिया टिके टिके फ्लेवर टेस्ट करिया तो दैट इज सैम्पलिंग बुझला ना नहीं गुटे गुटे सैंपल ऑब्टेन करिके देखिबा एमन नुआ फ्लेवर खाई दे चंदी मात्र मु खाइने ओके तो ऑडिट सैम्पलिंग रो मतलब होची कोन टेक्निक यूज्ड बाय ऑडिटर्स टू इवैल्यूएट अ सबसेट ऑफ डाटा फ्रॉम लार्जर पॉपुलेशन सबसेट ऑफ डाटा फ्रॉम लार्जर पॉपुलेशन टू फॉर्म कंक्लूजन्स अबाउट द होल जदी बहुत किछि डाटा अछि मनर गोटे चावल गुड़ाक टेस्ट करछंदी कि केमती अछि तार टेक्सचर से सब जिंस गुड़ाक तो सेटा की टेस्ट करछंदी ना जाईगिरी सब जगह टिके टिके इने उठेकी देखुछंदी चावल देखिकी तापर टेस्ट करछंदी कि से चावलटा आमे जोडा भाबुछु सेडा सहित फिट ना नाही कहिगिरी ओके तो ऑडिट सैम्पलिंग इज अ टेक्निक यूज्ड बाय ऑडिटर्स टू इवैल्यूएट अ सबसेट ऑफ डाटा माने टोटल डाटा रो गोटे पर्टिकुलर पार्ट किबा पोर्शन काढी आमे सेडा कोन करिया रिप्रेजेंट करिया गोटे लार्ज पॉपुलेशन रो बुझिला जदि आमर एते जगह रॉक्स अछि त हमें रॉक्स गुडा अलग अलग करिबा तो गुटे पॉपुलेशन ऑफ रॉक्स रिप्रेजेंट करिया पई गुटे रॉक रखिबा सेकंड को सेकंड रखिबा सिम्पली हमें जतलो को सबसेट बाहर करछु ताको हमें कहछु सैम्पलिंग since it is often impractical or unnecessary to examine every transaction or record auditors use sampling methods to assess the reliability of the financial statements internal controls and compliance with regulations okay तो ऑडिट सैम्पलिंग रो कोन होची ना यूज सैम्पलिंग मेथड्स टू असेस द पर्पस कोन आरो असेस द रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंटरनल कंट्रोल्स एंड कंप्लायंस विथ रेगुलेशंस बुझला तो ऑडिट सैम्पलिंग रो मीनिंग होचे सेडा एंड तार पर्पस होचे कोन ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स केते दूर विश्वास हमें करि परिबा आ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सहित केते सेडा मैच करूची एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जहा ऑर्गेनाइजेशन रखिची सेडा केते सुटेबल अछि से पर्टिकुलर डाटा पई एंड कंप्लायंस विथ द रेगुलेशंस माने लॉ रूल्स रेगुलेशन सब जगह किमती कंप्लाई होची कहिगे बुझिला Audit sampling allows auditors to draw reasonable conclusions about financial records without testing every transaction. तो audit sampling रो गोटे सबडो बड़ एडवांटेज कोन ना draw reasonable conclusions about financial records without testing every transaction. Each and every transaction test न करिगिरी आराम से सब जगह गोटे conclusion डा में बाहर करि परिबा just because we have audit sampling methods. It balances efficiency with accuracy, helping auditors detect material misstatements, fraud or errors while maintaining a practical workload. बुझी पाला माने जदि मनोगर आमे जानछु कि ऑडिट जहा भी अछि सेडा कंप्लीट स्क्रूटिनी असेसमेंट ऑफ द कंपनी तो ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन ऑफ द कंपनी हैज टू बी चेक्ड इन डिटेल बट एडी जिंस कोन होची ऑडिटर पाखरे ना एते टाइम थाउची ना तार एते पेशेंस थाउची ना सब जिंस चेक करला ले आमे कोन गोटे ऑडिट रिपोर्ट टा इजीली फॉर्म करि परिबा तो जेहेतु ए ड्रॉबैक्स हमर रही जाउची तो वी नीड अ सैम्पलिंग मेथड ओके तो दैट्स व्हाई कोन होची हमको ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन्स करियार अछि को जिंस पई ना फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स किछि भी ट्रांजैक्शन चेक न करिगी जोडा कि एफिशिएंसी एक्यूरेसी सहित थिबार अछि ताकि मटेरियल मिसस्टेटमेंट किछि न हो भूल भाल किछि न हो फ्रॉड एरर किछि न हो आउ तार वर्कलोड जहा भी अछि सेडा किंदी अधिक न होई गोटे लेवल रे मेंटेन हेगिरी थिबो बुझला this is the purpose or major objective of audit sampling बुझला तापर देखो टाइप्स ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग एटा बेसिक टा तार इन डिटेल एक्सप्लेनेशन पर अछि बेसिक रे से कोन कहूची स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग एंड नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग
तो स्टैटिस्टिकल वाली कहले कौन ऑब्वियसली अप्लाइंग स्टैटिस्टिकल मेथड्स नॉन स्टैटिस्टिकल माने कौन एनालिटिकल बुझी पाल ना नहीं तो एडा होची जिंस तो एते जाय किछि कार डाउट अछि देखो स्पीड अछि ना चलिबो ठीक अछि आ टिके स्लो फाइन नहीं तो नुआ चैप्टर टेडा चैप्टर 5 बुझे किछि डाउट अछि आज्ञा मटेरियल मिसस्टेटमेंट हाँ डिटेक्ट माने तारा मीनिंग पचारछु मटेरियल मिसस्टेटमेंट रो मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज लाइक देखो मिसस्टेटमेंट रो मीनिंग मु कहथली भूल भाल ठीक अछि मटेरियल वाली कहले जोड़ा की इफेक्ट पकोची डिसीजन मेकिंग ऑफ द स्टेक होल्डर्स जदि से जिंस गोडा हां एग्जांपल इन द सेंस देखो जदि शेयर कैपिटल जोड़ा अछि 10000 ला जदि से 1 लाख पकोची तो ऑब्वियसली देयर इज एन इन्फ्लुएंस एडी हैला मोर रफली जहा भी सेडा पढुची कोन करिया के तुमको थोड़ी अलाइनमेंट से किछि फर्क पड़छि ऑब्वियसली नहीं मो द्वारा अलाइन करके लिखा very poor at like presentation and all सत्तरे जो कौन भाई सत्तरे सत्तरे मु एजा कर पारिनी एटलीस्ट ये रे तो कर पारिनी लेखा लेखी ठीक अछि अलाइनमेंट ले कहले देखियार अछि कि कोडा साइज अछि लाइन स्पेसिंग से जगह आई एम इंस्ट्रक्टेड टू ओके फाइन एबे आसला मेन पार्ट जोडा कि चेंज करि पारियनी दैट इज स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग नंबर 530 the definition as per standards of auditing 530 audit sampling the definition kona na the application of audit procedures to less than 100% of items within a population of audit relevance such that all sampling units have a chance of selection to provide the auditor with a reasonable basis on which to draw conclusions about the entire population बुझी पाछ तो से कौन कहूँ ऑडिट प्रोसीजर जगह हम एप्लिकेशन करूँ मेन बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट एटा देख मु आउ गोटे जिनस मन रख मुझे जो गोटे लेसन स्टार्ट कर मोर ऑर्डरटा एमती रही कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आगे मु फर्स्ट रे लिखि बिकज पिलानंगर एनर्जी सेठी डिवोट होची बुझिला ना तमे जतलो चैप्टर स्टार्ट करछो यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि फर्स्ट जहाँ भी तमे पढुछो सेडारो तमरो इन कंपैरिजन लास्ट टॉपिक गुडागर एनर्जी कमी जिवो तो आई टेंड टू पुट इंपोर्टेंट टॉपिक्स इन फर्स्ट चैप्टर जिमिति कि मु ऑडिट एविडेंस टा फर्स्ट रे रखिथिली चैप्टर 3 रे
तो ऑडिट सैम्पलिंग बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन दैट इज स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग 530 जोथरे से कहूची कि एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स कौन कौन हमें ऑलरेडी देखिछु तो सेडार एप्लीकेशन करबा बट केते ऊपर करिया ना लेस देन 100% ऑफ द आइटम्स माने ऑब्वियसली सैंपल वाले कहले कोन सब जगह आइटम की नहीं टिके आइटम बाहर करिया हमें टिके आइटम्स ऊपर हमें कोन करिया ऑडिट प्रोसीजर टा एप्लीकेशन करबा विदिन अ पॉपुलेशन ऑफ ऑडिट रेलेवेंस माने इमिति सैंपल टा में बाहर करिया जेमति की हमको सेडा ऑडिट पे दरकार पड़े तीनटा एलिमेंट से टोटली कहिला बुझिला ध्यान दियो बिल्कुल भी एपड़ से बड़ा नहीं डाइवर्शंस नहीं फिकल माइंड होनी बुझिला such that the sampling units have a chance of selection to provide the auditor with a reasonable basis on which to draw conclusions about the entire population हेले से चारटा पॉइंट कहला एडी मतलब कौन कौन पॉइंट्स माते कहले फोर इंपोर्टेंट एलिमेंट्स अच्छी स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग रे जोडा कि हमें चेंज करि परियानी फर्स्ट थिंग इज एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स केते आइटम्स ऊपर लेस देन 100% माने टिके सैंपल आम इच्छा हमें जेति की सैंपल बाहर करछ ऑन less than 100% of items less than 100% of items okay such that all sampling units have a chance of selection hele a 100% of items joda achi capital of the most important point capital of representing the whole population सिंपल एग्जांपल कहू जेंति कि तमे कीवर्ड भूलिबोनी द थिंग हियर इज जेतोळगु गोटे पर्टिकुलर इंटर स्टेट कंपटीशन होची टीचर्स हैव टू स्पीक अबाउट द कॉलेज तो वाइस प्रिंसिपल हो कि एचओडी जे भी हो इमिति लोक जिबार अछि जेमिति कि समस्तंग विषय टिके टिके जानिथिबे सब क्लास विषय टिके टिके जानिथिबे नले प्रॉब्लम कोन हबो ना समस्त को तांके रिप्रेजेंट करि परिबे बुझिला एमती लोक गले आगा से स्कूल रो सब जगह गुडाको एस्पेक्ट गुडाको रिप्रेजेंट हबो हेले सिमिति इन द सिमिलर मैनर जेतोडा हमें पॉपुलेशन रो सैंपल डा डिराइव करचू से सैंपल डा पूरा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करलाळा थिबार अछि दिस इज स्पेशली एंड एक्सेप्शनली टोल्ड बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग 530 एति के मन रखिबो नंबर 2 कीवर्ड नंबर 3 रे से कोन कहूची चांस ऑफ सिलेक्शन chance of selection to provide reasonable basis माने तंके को एले क्वेश्चन बाहर करले से क्वेश्चन ना आंसर कर परला रयर अछि से ऑडिट सैंपल डा दिस इज द नंबर 3 कीवर्ड देन capable of drawing conclusion okay capable of drawing conclusion these are the 4 keywords in standards of auditing 530 मु काहेंगे स्ट्रेस करके कहूची जेहेतु एडा चेंज हे परिबनी दैट्स ऑल तमे आरे लाइक कहूछ ना कि गुड जिंस काहेंगे एते रिपीटेडली कहूछ बिकॉज़ पिलाने तार इंटेंसिटी टा बुझना आंदी कोडा चेंज हे परियो कोडा चेंज हे परिबन मु कहि दोची स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग वर्ड पढा आसले चेंज करि परियोनी देन नॉल तो चेंज करि परियो ओके मु लिखि देची तळे की पॉइंट्स फ्रॉम द डेफिनेशन दीस आर द की वर्ड्स एंड दीस आर द की पॉइंट्स से कहूछ लेस देन 100% टेस्टिंग इंस्टेड ऑफ चेकिंग एवरी ट्रांजैक्शन और रिकॉर्ड ऑडिटर टेस्ट्स अ सबसेट ऑब्वियसली कोडे सबसेट बाहर करिबा और सबसेट आगा चेकिंग करिबे sampling units have a chance of selection the selection process should be unbiased and representative किछि भी bias रया कथा नै ठीक ठाक भाबरे हेबा कथा reasonable basis for conclusion the goal is to form conclusions about the entire population based on the sampled items okay the standard ensures that the auditors conduct sampling in a structured and reliable manner to minimize risk this is an important mcq question तो standard माने कोन sa के थिला एडा 530 SA 530 ensures that को जिनसे ensure करियो ना नंबर 1 होची structured और reliable manner रे किमती carry out हबो एंड नंबर 3 होची audit risk ते किमती minimize हबो बुझि पालो
ऑडिट रिस्क किंदी मिनिमाइज हबो। बुझुची समस्त को इज इट ओके और आउरी स्लो दरकार फाइन। प्रगति जदि किसी डाउट अच्छी कहि पारिए। मत दीपी बाहर पड़छ पाठ ओके अभ्यास हैला। बेनिफिट्स देखो ए आसिले देखे रीजनेबल एश्योरेंस एफिशिएंसी ट्रांसपेरेंसी रिलायबिलिटी। फर्स्ट थिंग होची एफिशिएंसी कॉस्ट इफेक्टिव रीजनेबल एश्योरेंस reduces audit fatigue माने होची वर्कलोड हैला टायर्डनेस ड्यू टू वर्कलोड को हमें कहूचो fatigue। तो द कीवर्ड हियर इज audit fatigue नुआ वर्ड सिखिबो ना। enhances risk assessment systematic testing and regulatory compliance। सिंपल पॉइंट्स गुडा को आसीबार चांसेस कम तमो खाली डेफिनेशन पचारिबो ऑडिट सैम्पलिंग रो सिग्निफिकेंस जदी पचारछि एजा सब लिखिबो। कार टेलीग्राम नोटिफिकेशन मो पाठ को मोर व्हाट्सएप के बेले वाइब्रेट होबनी की कथा माने व्हाट्सएप रे सिंदी एते इंदी वर्किंग आवर्स रे कलाळे के नै ओके हमर सब ग्रुप जाक स्पेशली हां के प्रभु मे फेर लोकर मो पाखरे आई हैवंट केप्ट द नंबर। Today I'll reveal the face. Wait. Hela, Lekila. Varsha is able to relate. तक मन पड़छि माने से सिचुएशन से बहुत भल से रिलेट करि परछि मन पकई परछि डराव ना से ये देखिए पे तमे जाय ना सेडा भल हैला फालतू जिंस देखो फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड फॉर ऑडिट सैम्पलिंग लिखु जुगी न जाय ना थोड़ा लिखुनु पूरा हेले देखो फैक्टर्स कौन कंसीडर करियर अछि तमन निजे ऑर्डर कहलो ऑडिट सैंपल बाहर करला को फैक्टर्स कंसीडर करिया दरकार हेडी ओम एफिशिएंसी रिलायबिलिटी नै आ कोन को बोले को थिबो हां ठीक अछि कोन पचारली फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड ऑडिट सैंपलिंग पई रिस्क अरे देखो तुमको जो डेफिनेशन टा कहली से भितर आगा अच्छी पॉइंट गुडा को तमे आराम से कहि परियो देखिकी से दिडा तो नाही ऑब्वियसली सब जगह गाय गाय पळोच कैपेबल ऑफ रिप्रेजेंटिंग द होल पॉपुलेशन थिबार अच्छी से जिनसडा काम को आसियार अच्छी ऑडिटर को ता डिसीजन मेकिंग रे must be able to form conclusions for the audit report etc okay देखो से कौन लिखी फर्स्ट लिखी ऑडिट ऑब्जेक्टिव रिस्क नहीं तो हाँ नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है भाई audit objective the purpose of the audit procedure should determine the sample selection कहिथिले मो sample selection हला आले आगा थिबार अछि माने दरकार थिला आले second thing is population characteristics understanding the size nature and variability of the data set is crucial a highly diverse population
may require stratified sampling for better representation. Higher risk areas, a larger sample size to reduce audit risk. Auditors focus more on high value transaction or areas prone to fraud. Hela? से 530 अंडर रहेगा आसचे एडा मचे छे मेटेरियलिटी पळा आसला सैम्पलिंग मेथड एक्सपेक्टेड एरर रेट टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट नेचर ऑफ ऑडिट एविडेंस कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट हस्ते कोन पे देख किसी डाउट अच्छे ले कले कई बेसिक जिनस गुडाक आउरी आडो सिंपल लैंग्वेज मिलेओनी देखि दियो काई रे को कौन डाउट अच्छी की कथा कौन पे होचो देखो ऑडिट ऑब्जेक्टिव पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स रिस्क असेसमेंट एरे एक्सपेक्टेड रेट टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट रो मीनिंग मते कहलो कोन चलियो इफेक्ट पकेओनी अरे टी पकेओ टिके टिके पकेओ मोर इनटॉलरेबल मिसस्टेटमेंट हेतिला नै इनटॉलरेबल थैंक यू कौन कौन स्टेज ऊपर गाई दउची ए पूरा गाइला वाले टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट अली कहले टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट अली कहले कोन ना जो जिंसो ऑडिटर रो डिसीजन मेकिंग किंबा कंक्लूजन ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट ऊपर किछि इंपैक्ट पकेबोनी किंबा बहुत इनसिग्निफिकेंट इंपैक्ट पकेबो ओके कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट सब बुझा पड़ची तो आई डोंट थिंक सो एन एक्सप्लेनेशन इज रिक्वायर्ड अप्रोचेस देखो अप्रोचेस आर वेरी वेरी इंपोर्टेंट बहुत इंपोर्टेंट पार्ट एटा हला मु सब जो इंदी कोन भाई टिके टिके कोच कोडा गुट्टा गा इंपोर्टेंट नै कोच ऑडियो फंक्शन रे कहला आलिया पूरा मो पे एटा बहुत गुटे लाइफ चेंजिंग फिल्म सब जगह रे जे कहि दोचन मु सिन सब गुडा को इंपोर्टेंट कोनी ओके अप्रोचेस टू ऑडिट सैम्पलिंग देखो फर्स्ट थिंग इज स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी बेस्ड ओके आ गोटे कौन थिला हमरो नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग जजमेंट बेस्ड तो तुमको जजमेंट बेस्ड सैम्पलिंग कहले तमे कंफ्यूज हबनी एंड प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग कहले तमे कंफ्यूज हबनी दिस अप्रोच यूजेस मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स to ensure an unbiased sample selection and provide measurable sampling risks okay तो ये कौन ना मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल मेथड यूज करूचंदी तो बहुत स्टैटिस्टिक्स रो बहुत मेथड हमको जणा मीन मीडियन मोड वगैरह जा भी होची तो सेम मेथड गुडा को एडॉप्ट करिगी कोन सैम्पलिंग गुडा को बाहर करिए तो फर्स्ट थिंग होची रैंडम सैम्पलिंग देन होची सिस्टमैटिक सैम्पलिंग देन स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग तो कोडाले डेफिनेशन पचारि परिया दैट्स व्हाई आई हैव गिवन वन लाइन रैंडम सैम्पलिंग रे कोन होची रैंडमली जहा भी उठेबे तांके गुटे यूजिंग अ रैंडम नंबर तमे भी पढ़छ पूरा येडा कोन से चैप्टर रो नाडा रिग्रेशन लाइन ने रैंडम नंबर्स थिबो ताको मैच करिवो ओपीएम रे पढ़छ आसीनी आइनी और एबे जे सेफेस्ट आंसर काम चलला systematic sampling रे कोन होची every nth item after choosing a random starting point in the sequentially number करियार जा करियार dividing the population into subgroups based on characteristics samples are selected from each stratum proportionally selects transaction based on their monetary value higher value items have a greater chance of selection useful for detecting material misstatement each stratum वाली कहले each माने को गोटे हमें क्वालिटी रखिथिबा से पर्टिकुलर क्वालिटी रो पर्टिकुलर ये जागरो हमें गोटे सैंपल टी
बाहर करिया ओके population is divided into clusters and entire clusters are tested used when data is spread across multiple locations okay तुमको से टाइप्स रो इन डिटेल क्वेश्चन आज केबे पचारनी तो मे भी पचारि पारिया कोई मु कहि दिछि किछि डाउट अछि जति पचारि पारिया गोटे गोटे कीवर्ड का डिफरेंस अच्छी सब जगह रे सैम्पलिंग रे रैंडम सैम्पलिंग तो सबुठु इजी जहाँ भी उठे आन दियो धनी लोक जेंदी गोटे 3-4 हजार लिपस्टिक टा जेंदी किणे रे रैंडमली उठे पळा आछंदे आउरी थाउची कि ओ तू बेस जान छु तो खुल देछ ना कोन शॉप टा घर छाड़िए हाँ हाँ डाउट अच्छी पचरे माने इंद डाउट जा सब हाँ मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग रे कौन होची मॉनिटरी वाली देखि होची सेटा देखि कि मते आधा घंटा लाउची आंसर करिया पे माने पिटी ना कौन करी अब एडी सैम्पलिंग रे तार मटेरियल मिसस्टेटमेंट कोड आसला अच्छा अच्छा से पॉइंट रो नहीं हेले देखि थर्ड पॉइंट रो आसला क्लस्टर सैम्पलिंग रे कौन होची देखो मंथ्स वाइज डिपार्टमेंट वाइज आमे माने क्लस्टर करिके ग्रुप करिके ताडो आमे सैंपल गुडा को बाहर करे ओके नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग रे कौन होची दिस अप्रोच रिलाइज ऑन द ऑडिटर्स एक्सपीरियंस एंड जजमेंट रादर देन प्रोबेबिलिटी बेस्ड सिलेक्शन तो ऑडिटर रे एक्सपीरियंस जजमेंट एनालिसिस बेसिस रे से किछि भी गोटे सैम्पलिंग मेथड टा एडॉप्ट करियो हैफजेड सैम्पलिंग माने कोन माने से जदि गोटे स्ट्रक्चर्ड मैनर रे करथिबो तो लोकाने चाहिले कोन लुचै पारिबे जिंस गुडाको तो से हैफजेडली ट्राई करिवो से जिंसडा हैंडल करिया पय देन ब्लॉक सैम्पलिंग माने कोन ट्रांजैक्शन गुडाको माने रैंडमली एते जा मंथ्स रो थिबो से गोटे ब्लॉक टा उठेबो से ब्लॉक रो सब जिंस गुडाको चेक करिवो दैट इज ब्लॉक सैम्पलिंग ओके जजमेंटल कोन इंटेंशनली सिलेक्ट्स माने गोटे जागा रे जोडी रिस्क बेसी हेई पारिबो से पर्टिकुलर येडा काडी के ताडू सैंपल से बाहर करिवो दिस इज जजमेंटल सैम्पलिंग किछि डाउट अछि तीनटा चारे सुनछु की डिफरेंसेस देखो key differences between statistical and non statistical sampling statistical sampling रे कौन होची we are adopting we are adopting mathematical formulas and statistical formulas to obtain a sample from a large population non statistical sampling रे कौन होची haphazardly and randomly गोटे ऑडिटर जहाँ भी जजमेंट दोची ता बेसिस रे कौन गोटे सैंपल टा बाहर करचंदी बायस कोडी बेसी हेई परिबो नॉन रे काहे की नॉन रे नॉन नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग रे भाई नॉन रे पनीर रे कौन हेडा हैला हेले मे हैव सिलेक्शन बायस काहेकी से ऑल्टर जदी टिके सांग हेइथिबो कि तार कोन चिन्ना परिचय हेइथियो तो कोन से रैंडमली गोटे उठेबनी जोड़ा जानछि कि सेठी भूल भाल हेछि सेडा न उठे आ कोडा गोटे उठे पारे बट स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग रे कोन जोड़ा हमें फार्मूला पके आनछु से भितर आगे आसीबो तो दैट्स व्हाई इट इज less biased measure of risk एडी कोन measurable risk एडी होची बट एडी होनी risk टा मेजर हे पारिबोनी objectivity एडी हाई बट एडा होची subjective objectivity हाई माने कोन टू द पॉइंट तो आंसर करि पारियो सेडी चाहिले गुटे सैंपल बाहर करि पारू तो जो क्वेश्चन अछि त क्वेश्चन सहित मैच करके कथार्थ हे पारू बट एथरे कोन हे पारिबो ना सब जिंस सब्जेक्टिव माने एनालिटिकल बेस्ड ठीक अछि फाइन थैंक यू